If we plan to make chocolate milk for our family, then we will add ingredients like milk, sugar and chocolate in a proportionate amount, right? Now what if we have guests at home? We will simply have to double or triple the amount of individual ingredients. Simple, isn't it? It means that for a particular recipe, the proportion of inputs will almost always remain the same. Why are we discussing this along with the concept of atoms? That's because it will help us understand a few important laws related to atoms. The introduction to the concept of atoms was a major breakthrough in the field of chemistry. However, proving the existence of atoms needed many experimental evidences. The hypothesis that matter is formed out of atoms needed experimental evidences. Soon a French chemist called Antoine Lavoisier carried out several experiments to finalize some strong and valid concepts. After remarkable observations and ideologies, we could get the two major laws of chemical combinations. The two laws are law of conservation of mass and law of constant proportions. Let us understand each law in detail. Let's take a simple example. Just imagine we carry out an experiment in which element A and element B react together to give us a compound C. If we keenly observe, we find that atoms of elements A and B do not exist individually in the reaction mixture. They come together to give us the new compound C. Although it seems that atoms of elements A and B are degenerating, it's not the case. In reality, they are combining to give us the compound C. Antoine Lavoisier put forth the law of conservation of mass, and do you know what it tells us? It states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. He explained this law by saying that matter is formed from the pre-existing matter, and the mass of the newly formed matter will be the same as that of the pre-existing matter. We can neither create new matter nor destroy the existing matter. So the chocolate milk that we made in the beginning came from the milk, sugar and chocolate mixed together. Similarly, we could see that compound C is formed only when atoms of elements A and B combine together. So new substances are formed only when pre-existing ones combine in nature. New things cannot be made from nothing. The input for any matter that's formed is always the matter that already exists. Now this was the first law. We concluded the previous video by understanding the first law of chemical combination. Now we need to take a look at the second law, which is called the law of constant proportions or the law of definite proportions. They're the same thing. The law was first put forth in the year 1797 by a French chemist called Joseph Proust, and hence is also referred to as the Proust's law. What does the law state? The law states that in a chemical substance, elements are always in a fixed proportion by mass. Now what does this mean? It's not straightforward to comprehend this statement at the first glance. Remember the example of chocolate milk that we considered while studying the first law? In that example, we saw that when we have to make double or triple the amount of chocolate milk, all we have to do is use the proportionate amount of the individual ingredients. Wait, did I say proportionate amount? What does that mean? It means that when we have to make the drink for 10 people instead of 5, we just have to take double the amount of ingredients, right?
Anything more or less would result in change of taste. Similarly, in any chemical substance, the elements present are always in a fixed proportion by mass. So let us take the example of elements A and B giving us the compound C. Now, if we observe just one single unit of the compound C, then we can notice that it has 2 atoms of element A and 3 atoms of element B. Is it true for all the units making up the compound C? Yes, it means that even if one atom from any of these units is removed or added, then it can no longer be called compound C. It will change to something different. So if the number of atoms is fixed, then the mass will also be constant, right? Absolutely. The best example to study this is that of ammonia. If we decompose ammonia by any means, say by extreme heat or some other way, then we get the nitrogen and hydrogen atoms in the same proportions by mass. So let's say we take 17 grams of ammonia. If we decompose it, then we will get 14 grams of nitrogen and 3 grams of hydrogen. So can we say nitrogen and hydrogen are present in ammonia in a constant ratio of 14 to 3? Even if we decompose ammonia in any other way, the ratio of nitrogen to hydrogen in the compound will always be the same, 14 to 3. Yes, and this is seen in all the compounds existing naturally or even artificially. But when these laws were put forth in the form of theories, proving them was quite a concern. All these explanations that we know now are due to experiments performed for many decades. Several scientists came up with many experiments and explanations. Among all, a notable theory by the name Dalton's atomic Alright, now we're going to go over the law of multiple proportions. So this law, in addition to the law of conservation of mass and the law of definite proportions, provided strong evidence for the atomic theory as we know it today. So this law was proposed by John Dalton in 1804, and it says that when 2 elements, A and B, form 2 different compounds, the masses of element B that combine with a fixed mass of element A can be expressed as a ratio of small whole numbers. So that sounds really complicated, but it's really not. So that means if I have some compounds of the general form AB, AB2, AB3, etc., if I use the same mass of A for all 3 of these compounds, so suppose all 3 of these masses are all 1 gram for simplicity, then that means if I compare the mass of B in this compound to the mass of B in this compound to the mass of B in this compound, well, those ratios are going to be, I'll just call them X, Y, and Z. Those ratios are going to be small whole numbers. So let's go over an example of a real compound, and we'll examine this law of multiple proportions a little bit further. So I'm going to give myself some room here real quick. Just bear with me. So suppose I have carbon combining with oxygen. And carbon can combine with oxygen to produce more than one type of compound. So let's say it can
carbon and oxygen can combine to produce carbon monoxide, CO, and carbon dioxide, CO2. So this would be, the CO would be like AB and the CO2 would be like AB2, for instance. So carbon would be A and oxygen would be B in this particular case. So suppose I keep the mass of carbon fixed at 1.0 grams. Well, since we know the mass ratio of these two guys, carbon monoxide and carbon dioxide, according to the law of definite proportions, there's a certain fixed mass ratio associated with each of these two compounds. It turns out that the masses of oxygen that have to combine with 1 gram of carbon to form carbon monoxide and carbon dioxide are 1.33 grams and 2.67 grams respectively. So that means if I have 1 gram of carbon, I need 1.33 grams of oxygen to get carbon monoxide, CO. And if I have 1 gram of carbon, I'm going to need 2.67 grams of oxygen to get CO2. So now what we're going to do is divide the larger by the smaller. So if I take 2.67 grams of oxygen given from the CO2 molecule, and I divide that by 1.33 grams of oxygen given from the carbon monoxide, then I will get a whole number, a small whole number, which is 2. So that, in a nutshell, is the law of multiple proportions. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स की, जो कि केमिस्ट्री का, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का एक फंडामेंटल लॉ है। इसे सबसे पहले प्रपोज किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है, ऑब्वियसली फ्रेंच नाम है तो हमारे लिए प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकूं। इनका नाम था जोसेफ लुई गैलिसैक। इन्होंने कहा था कि अगर गैसेस कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे गैसेस अगर कंबाइन हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में उनका जो वॉल्यूम है
वो सिंपल रेशियो में होता है, बहुत ही सिंपल रेशियो में होता है, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होता है। प्रोवाइडेड दैट, ऐसा होना चाहिए कि वो सारे गैसेस जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रहे। हमें पता है टेम्परेचर या प्रेशर अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, इसीलिए सबको अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रखते हैं, फिर उनका अगर केमिकल रिएक्शन होता है और अगर कोई भी गैस थोड़ा सा भी अनरिएक्टेड न रह जाए, तो फिर आप पाएंगे कि उनका जो वॉल्यूम का रेशियो वो बड़ा ही सिंपल रेशियो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है। हाइड्रोजन नॉर्मल नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर में ये गैसेस रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पानी। सो यहां से हमें मिलता है पानी। अगर प्रेशर को बहुत कम रखा जाए और टेम्परेचर अगर काफी हो तो फिर ये पानी ये हमें गैसेस फॉर्म में मिलता है, इसका वेपर हमें मिलता है। बहुत लो प्रेशर में लगभग 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस में भी आपको पानी गैसेस फॉर्म में मिल जाएगा। सो इन सब चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। फिलहाल यहां जो मुद्दा है कि तीनों गैसेस फॉर्म में है। यहां पर रिएक्टेंट्स दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी गैसेस फॉर्म में है। तो इस केस में ऐसा पाया जाता है कि जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो कि रिएक्ट कर रहा है, ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से कोई भी जो रिएक्टेंट है इनका कोई भी पार्ट अनरिएक्टेड न रह जाए। सो ऐसा स्थिति में आप ये पाएंगे कि अगर दो वॉल्यूम का हाइड्रोजन लिया जाता है, हाइड्रोजन दो वॉल्यूम का, यूनिट कुछ भी हो सकता है ये क्यूबिक मीटर हो सकता है ये लीटर हो यूनिट, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर हो, वो मैटर नहीं करता। जो भी यूनिट है वो आप फिक्स कर लें। उस यूनिट के हिसाब से दो यूनिट का अगर हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेगा अगर एक यूनिट के ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा 2 यूनिट का पानी, 2 यूनिट वॉल्यूम का पानी। मैं फिर से बता दूं, यूनिट कुछ भी हो सकता है। सो हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिलेगा H2, ये 2 वॉल्यूम का H2 एक वॉल्यूम के ऑक्सीजन के साथ मिलते हुए रिएक्ट करते हुए 2 वॉल्यूम का पानी बनाएगा H2O। सो मैं यहां लिख देता हूं, ये है 2 वॉल्यूम का, ये है 1 वॉल्यूम का, 1 यूनिट वॉल्यूम का, और ये हमें 2 वॉल्यूम का पानी मिलेगा। ये हमेशा होगा। देखिए यहां पर जो वॉल्यूम का रेशियो है बड़ा ही सिंपल रेशियो, बड़े छोटे होल नंबर्स का रेशियो हमें मिला, 2, 1, 2, ये बड़े ही छोटे नंबर्स का रेशियो है। अगर इसे समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको यहां पर आवोगाद्रोज लॉ भी समझना होगा। इस लॉ को अमेदियो आवोगाद्रो, इटालियन वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को इनैक्ट किया था। इस लॉ के हिसाब से अगर इक्वल वॉल्यूम का आप गैस लेते हैं, चाहे गैस कोई भी हो, इक्वल वॉल्यूम का गैस, 2 तरह का गैस मान ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चलिए साथ में वाटर वेपर को भी कंसीडर कर ले, गैसेस फॉर्म में है पानी। तो इक्वल वॉल्यूम का हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, गैसेस फॉर्म में, अगर उसे सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाए तो ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। मतलब ये बना कि यहां पर सारे तो सेम प्रेशर और टेम्परेचर में है, तो सारे टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहे तो फिर हम ये कह सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर x हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी एक वॉल्यूम में, इतना सा वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो x होगा। और यहां पर भी चूंकि वॉल्यूम उतना ही है, किसके बराबर है, वॉल्यूम इसके बराबर है, तो यहां भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x होंगे। और चूंकि ये दुगना वॉल्यूम का है तो इसे भी आधा कर लेते हैं। सो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, तो सेम वॉल्यूम है किसका, ऑक्सीजन का, और इस पार्ट का, पानी के इस पार्ट का, वाटर वेपर के इस पार्ट का, और सारे तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में है ही, तो यहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x होंगे, यहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x होंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम इसके साथ बराबर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, हमें पानी मिलेगा। अगर एटॉमिक फॉर्म में लिखें, ये सही नहीं होता है एटॉमिक फॉर्म में लिखना, फिर भी मैं पहले एटॉमिक फॉर्म में लिख लेता हूं कि 2 हाइड्रोजन एटम ये एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा और ये एक H2O मॉलिक्यूल बनाएगा।
सो ये 1 है, ये ऑक्सीजन का O है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है लिखने का। तो केमिकल रिएक्शन को हम अगर सही तरीके से लिखते हैं तो हमें कहना होगा कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन है। ऐसे अगर हम x रिएक्शंस करते हैं, मतलब x सेट्स लेते हैं, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 10 12 5000 5 लाख 5 मिलियन 5 बिलियन कुछ भी हो सकता है। सो x सेट ऑफ रिएक्शन इस तरह का हो रहा है। दैट मीन कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 2x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ये रिएक्ट करेगा x मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ और ये बनाएगा 2x मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आप इस फिगर में देख लें, 2x मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है x मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और ये हमें दे रहा है 2x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। सो यही था लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, जिसे कि हम समझ सकते हैं एवोगाड्रो।
Stoichiometry. The stoichiometry of a reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid is examined. Wash an evaporating dish with soap and water. Rinse it with distilled water and dry it. Heat the evaporating dish on high heat on a hot plate for 5 to 10 minutes to remove any trace of moisture. Remove the dish using crucible tongs and allow it to cool to room temperature. In the meantime, on the same hot plate, heat a 400 milliliter beaker filled with approximately 250 milliliter hot tap water. This will serve as the hot bath. Weigh the evaporating dish only after it's at room temperature and record the mass. Be sure to record every single digit on the balance. Tare the evaporating dish and weigh approximately 0.3 grams of sodium carbonate. Record the exact mass, making sure to record every single digit shown on the balance. Add distilled water dropwise to the sodium carbonate, just until the salt is moistened. Then add 4 drops of the methyl red indicator. The solution will turn yellow. Obtain about 5 milliliters of 3.0 molar hydrochloric acid in a graduated cylinder. Cover the evaporating dish with a clean and dry watch glass. Add the 3.0 molar hydrochloric acid dropwise using a medicine dropper down the spout of the evaporating dish without removing the watch glass. Add the hydrochloric acid until the solution is faint pink. Place the evaporating dish on the hot bath to heat the solution. Heat for approximately 5 minutes after the solution has warmed up. As the solution is heated, if the solution turns yellow, add more hydrochloric acid until the pink color returns. Remove the watch glass using crucible tongs. Rinse any solid that may have collected on the bottom of the watch glass into the evaporating dish with a small amount of distilled water. Do not use too much water, as it will ultimately have to be boiled off. Continue heating the solution gently on medium to high heat. When the solid is almost dry, lower the heat to a minimum, grab some paper towel, remove the evaporating dish using crucible tongs, dry the bottom, then place the evaporating dish directly on the hot plate. Remove the beaker of water using beaker tongs. Heat the evaporating dish for a few more minutes if there's no spattering. Remove the evaporating dish off the hot plate using crucible tongs and allow it to cool to room temperature. Weigh the evaporating dish and record the exact mass. Reheat the evaporating dish directly on the hot plate. Remove it off the hot plate using crucible tongs and then allow it to cool to room temperature. Weigh the evaporating dish and record the mass. Continue reheating and reweighing until a constant mass is obtained. Then you'll know the product is completely dried. Clean the glassware and put away the equipment. Now let's do your problem with your group. Let's do your problem.
Yuk. Nomor 1 apa, Rek?